मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूं पर बोल नहीं पाता हूं। अच्छा लिखता हूं, अच्छा लिख लेता हूं इंग्लिश, पर बोलने का टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं मैं। जब किसी के साथ बात करता हूं, बात करने का टाइम बहुत हिचकिचाहट होता है और गलत इंग्लिश बोलता हूं और सोचता हूं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर मैं गलत इंग्लिश बोलूंगा तो सामने वाला मुझ पे हंसेंगे, सामने वाला तो मुझ पे हंसेगा। मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरा कॉन्फिडेंस क्या तहस नहस सत्यानाश हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग करना तो दूर की बात, और क्लासरूम में सबके सामने इंग्लिश बोलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है कि अगर मैं एक छोटा सा गलती किया तो पूरा क्लास मुझ पे हंस पड़ेंगे। तो इसी कारण के वजह से बहुत प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं। और इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लाइक ये तो नामुमकिन जैसा है। और इंग्लिश बोलना मतलब लिखना तो बहुत आसान है, पर बोलने का टाइम सारा प्रॉब्लम, पूरा आसमान टूट पड़ता है बोलने का टाइम। क्या ये सारे प्रॉब्लम आप भी फेस करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करता था और धीरे धीरे मैं इस भाषा को सीखता गया और इम्प्रूव करता गया। और जब मैं ट्यूशन करता हूं और कॉलेज में पढ़ाता हूं, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, आपका नहीं है, 99% स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। 99% स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस एडवांस इंग्लिश। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि एडवांस इंग्लिश में आप क्या बोलोगे। नॉर्मल इंग्लिश तो हर कोई बोल सकता है, हर किसी को पता है नॉर्मल इंग्लिश, पर आप एडवांस इंग्लिश कैसे बोलोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। हमारे नॉर्मल इंग्लिश के पहला सेंटेंस जो है, टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर। टेल मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर। यह है नॉर्मल इंग्लिश। तो इसी को आप एडवांस इंग्लिश में क्या बोलोगे? What will you say or how would you express in advanced English this simple sentence? So instead of saying this, tell me what is the most important learning of this chapter, you can say that, tell me the key takeaway of this chapter. Tell me the key takeaway of this chapter. So our next sentence is, don't make fun of someone. In advanced English, what can you say? What would you say in advanced English? Someone. In advanced English, you can say, don't look down on someone. Number 3 is, let's meet today. Normal English. What can you say in advanced English? In advanced English, you can say, let's catch up today. Let's catch up today. Number 4 is, I'm eating. What can you say in advanced English? Advanced English for I'm eating is, I'm having a meal. I am having a meal. Number 5 is, I'm very happy. What could be the advanced English for I'm very happy? So the advanced English of I'm very happy is, I'm over the moon. I am over the moon. So number 7 is, leave me alone. What could be the advanced English for leave me alone? How can you express? You can say, instead of saying leave me alone, give me a break. Give me a break. Number 7, I visit my hometown very rarely. What could you say in advanced English? You can say, I visit my hometown once in a blue moon. I visit my hometown once in a blue moon. Number 8, you are so beautiful. You are so beautiful. How could you express in advanced English? You can say, instead of saying you are so beautiful, you're gorgeous. You are gorgeous. Number 9, text me when you get free. Instead of saying text me when you get free, you can say in advanced English, hit me up when you get free. Hit me up when you get free. Number 10, are you mad?
Instead of saying, "Are you mad?" in advanced English, you can say, "Are you out of mind? Are you out of mind completely? What the hell you are doing?" So these are the advanced English. Normal English is very easy. Most of the people speak in normal English. But if you want to advance in your life, if you want to level up yourself in English, you must learn the advanced English. So stay tuned with us. We will be uploading such many more learning, educational, motivational videos in Learn, Develop, Grow. See you soon with another new topic. Till then, take care of yourself and keep developing and keep learning. Learn, Develop, Grow. India सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा. जय हिंद. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल लर्निंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखना और सीखते रहना.